So hello everyone and welcome to Career Launcher. So as we all are aware that every Sunday at 8 p.m. we are having a static GK revision class where I discuss in the question and answer format. And so today is Sunday and we are having 8 p.m. So let us begin with today's class. So मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Am I audible, visible? Is everything fine? Okay, I think I'm audible, visible. So let us begin with today's class. So let us begin with the first question of the day. The first question C is the first Finance Commission of India was established in the year 1948, 1956, 1965, 1951. What is the right answer? Yes, good evening, Priyanshi. I think my voice is clear, right? Everything is fine. So let us begin with the first question. First Finance Commission kab bani thi? In which year? And who was the chairman? Yes, very good. 1951. So the right answer is D is the right answer to this question. And who was the chairman of this Finance Commission? First Finance Commission के chairman का नाम क्या था? I am waiting for the response. A Constituent Assembly member KC Neogi, है ना? So KC Neogi. This is the spelling Neogoy. Yes, Adija, you are right. Very good. Now I have one question, which is actually this type of question is asked in AILET exam. That Finance Commission of India is which body? So I am giving four options: A, B, C, D, like this. Constitutional, statutory, neither A nor B. मतलब neither constitutional nor statutory, ये मतलब हुआ, या like passed, made by executive resolution. What should be the most perfect answer to this question? क्या आंसर होना चाहिए? Adrija and Priyanshi is saying it is a constitutional body. Okay, very good. Then please tell me which article talks about that. Yes, Adrija, Priyanshi and Siddhi, you all are right. Constitutional body. So it means it must be mentioned in the constitution. यानी कि आप ये कह रहे हो कि एक संवैधानिक बॉडी है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से आर्टिकल में मेंशन. आर्टिकल 280. ग्रेट. Adrija and Priyanshi, you both right. Article 280 of the Indian Constitution. Yes, Priyanshi, Siddhi, Vij, you all right. So that is what you should know. And it is under Article 280 of the Indian Constitution. Okay. Very good, Adija, Priyanshi, Siddhi, Vij, aspirant, all-rounder, you all right. Let's move on, Hannah. And please tell me, now we are having currently which Finance Commission is there? अभी currently कौन सा Finance Commission? Currently we are having which Finance Commission? So let me give you currently which Finance Commission is there. 16th, very good. And who is the chairman of the 16th Finance Commission? Chairman का नाम क्या है? Yes, Mr. Arvind Panagaria. And who is Mr. Arvind Panagaria? Dr. Arvind Panagaria is famous for a very important post earlier also. First Vice Chairman of Niti Aayog. नहीं, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम थे. मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम वाज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. ठीक है, ठीक है. Mr. Arvind Panagaria was the first vice chairman of Niti Aayog. Khair. Let's move on to the next one.
Which of the following group of articles guarantee right to equality in Indian Constitution? Article 12 to 15, 14 to 18, 20 to 22, 25 to 28. Right to equality का mentioned है. Yes, Priyanshi, aspirant all-rounder, Siddhi, which Adrija, you are right. The right answer is option B, Article 14 to 18. B is the right answer to this question. Now, please tell me one more thing, that how many fundamental rights are there? How many fundamental rights are there in the Constitution? Yes, Ashim, Adrija, aspirant all-rounder, which? Yes, 6 है ना, 12 to 35 आर्टिकल तक माना आता है जनरली, ठीक है. So fundamental rights are mentioned in which part? कौन से part में mentioned है? Which is actually from article 12 to 35. Which part? Please tell me. Fundamental rights are mentioned in which part of the Indian Constitution? Part 3. Yeah, good. Priyanshi. Yes, Siddhi is right. So these are the 6 fundamental rights in front of you, है ना. So अभी हम लोगों ने ये वाला पूछा था, right to equality, article 14 to 18. Then we have right to freedom, 19 to 22. Right against exploitation, 23 to 24. Right against freedom of religion, 25 to 28. Right to freedom of religion. Culture and education right, 29 and 30. Right to constitutional remedies, article 32. So these are 6 fundamental rights. अच्छा, एक और होता था 7th one. There was one more which was mentioned in article 19 1F और 31 में कहीं पे mentioned था. What was that? एक और फंडामेंटल राइट कहीं और था. 33, 34, 35 उतना डिटेल नहीं जाना प्रियंशी, बट फंडामेंटल राइट्स है 12 to 35. वो मार्शल लॉ वगैरह से रिलेटेड है और आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कुछ है, ठीक है. The right answer is right to property. Yes, but it was removed as fundamental right. When? कब इसको हटा दिया गया? And now right to property will be considered as what? अब राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा और कब फंडामेंटल राइट्स हटा दिया जाए? आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पांस. लीगल राइट 300A, कैपिटल ए. Yes, Ishita, very good. Ashim, aspirant 90th, not 42nd amendment, 44th. Yes, so it was removed by 44th constitutional amendment 1978. किसकी गवर्नमेंट थी? Who was the government? ना. And now it is under article 300 capital A. So ideally it should be the term used should be constitutional rights because it is mentioned in the constitution. So the word would be used constitutional rights. कहीं कहीं पर लीगल राइट्स लिख देते हैं, बट लीगल राइट्स जो है स्टैचुरी पार्लियामेंट्री लॉ से फ्लो होता है, तो कहीं कहीं पे लिख देते हैं समवेयर. बट आई थिंक द मोस्ट परफेक्ट आंसर वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. हाउएवर इफ दे राइट लीगल राइट्स, एक्सेप्ट इट टू बी ट्रू, है ना. बीजेपी, जनता पार्टी, नॉट बीजेपी. 44th amendment 1978, at that time Janata Party was there. Janata Party, it is different from the current BJP, do not get confused. Okay. Yes, Ashim, right. हाँ, Priyanshi, हाँ, good. ठीक है, so फिर इसको हटा दिया गया. So now we are having 6 fundamental right. अब एक काम कीजिए, I am asking AILET PYQ. This is actually a PYQ of UPSC as well as AILET. ठीक है, and many other exam, और बहुत सारे स्टेट PCS से ही पूछा गया. You have to tell me, यहाँ पर on the screen it is mentioned, out of these, where will you find the term heart and soul of the Indian Constitution? Of the Indian Constitution, who said this? And about which article this person said this? इस महान आदमी ने ऐसी बात कही और आपको ये बताना है कि कौन से आर्टिकल के लिए कहा गया. Yes, Priyanshi, Ashim, Ishita, Siddhi, Adrija, aspirant Ashim, all right. Article 32 और किसने कहा? Who was the person? Dr. B.R. Ambedkar.
Yes, Article 32. Why? क्या खास है? What is there in Article 32, right to constitutional remedy? क्या होता है ये? Can anyone tell me? What is so special? What is the important thing that flows from 32? क्या क्या खास निकल के आता है? Can issue writs? Supreme Court can. Yes, writ jurisdiction. Supreme Court writ power है ना. So basically, Supreme Court seek reserve for the valuation. Yes, Aditya, very good. Fundamental rights being compromised. Good. So basically, all these top five fundamental rights can be protected only when we have the sixth one. Yes, it gives teeth है ना to the Supreme Court. कहने का मतलब है कि of course it gives all the powers है ना. So that's the idea behind this. Supreme Court can issue writs like habeas corpus and many others. So B is the right answer here to this question. ठीक है. Let's move on further to the next one. ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है and this was asked also in many exam. Who among the following headed the first day of the Constituent Assembly on 9th December 1946? बहुत सारे prominent exam में क्वेश्चन आया था. Yes. एक जगह एक्चुअली एक बहुत प्रोमिनेंट गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछा था, which of the following was the interim president है ना of Constituent Assembly? Again the same thing, same question. So the answer would be option D, Sachidanand Sinha है ना. D is the right answer to this question. So he headed first day of Constituent Assembly, but after 2 days and 11th को Dr. Rajendra Prasad took over as the president, full-fledged president. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. So Sachidanand Sinha was the interim president of Constituent Assembly, है ना. And who was the chairman of drafting committee? So there are many committees of Constituent Assembly. The most famous one was drafting committee, है ना. It is not like okay, there is only one committee. There were multiple committees. One of the most famous one is drafting committee. And who was the chairman? Yes, Dr. Bhimrao Ambedkar, right. Priyanshi, Ishita, you all right? And drafting committee's chairman was Dr. Bhimrao Ambedkar. Good, very good. Now the next question is Niti Aayog was constituted under which of the following articles of the Constitution? Yes, Priyanshi, very good. You have answered it. Yes, right. So basically, Niti Aayog is not a constitutional body. So when it is not, I mean, like you will not find anywhere talking about this. So the answer would be Niti Aayog is a neither statutory because it is not formed as a result of even a law of parliament nor constitutional body. ये answer. Passed made as a result of executive resolution. Similar is the case with its precursor. इसका precursor क्या था? What was the precursor of Niti Aayog? Precursor of Niti Aayog. ये भी पूछते हैं एग्जाम में. Planning Commission. Good. But I'm expecting everyone to answer. बस एक दो आंसर आ रहा है. Yes, Planning Commission was its precursor. So Planning Commission में Prime Minister होते थे, Vice Chairman. Prime Minister was supposed to be the chairman, and there would be a Vice Chairman. है ना. So 1950 मार्च से लेकर 2014 तक था, and फिर नीति आयोग was established on 1st January 2015. ठीक है, so ये आपको पता होना चाहिए. Now I have one more question. ठीक है, तो ये तो आयोग में डबल ए होगा, एक ए मिस कर गया. ओके, नाउ आई हैव वन मोर क्वेश्चन. देखो इसमें क्वेश्चन को ध्यान रखना कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये सोच ही नहीं रह पाओगे एग्जाम में कि कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं. तो समटाइम्स क्वेश्चन मेकर ट्राई टू एक्चुअली पजल यू इन द एग्जाम, है ना. So that is what you should know. अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. Let me see, because this also was asked in a very prominent exam. Read the question carefully and then answer me.
ये 1 होगा, 1 ऐसे लिखा था, 1 2. So options were the question is DPSP, Directive Principle of State Policy, imposes limitations on legislature, executive, and these are your options: 1 only, 2 only, both 1 and 2 only, and all of the above. ये यहाँ से options है इसके नीचे. Read the question carefully and answer me. Majority have said D. Why? This was asked in a very prominent government exam, so इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं. इस क्वेश्चन का आंसर से आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई यू हैव सेड डी? मेनी पीपल हैव सेड डी. रीजन, आई वांट टू नो द रीजन. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ना. मैं कभी कभी देखता हूँ कि किसी एक ने लिखा, सबने कॉपी कर लिया, बट आई नीड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. यस प्रियांशी, वेरी गुड. इसमें पूछ रहे डीपीएसपी इंपोजेस लिमिटेशंस ऑन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन. ये लिमिटेशन तो नॉन बाइंडिंग एडवाइस सही है, नॉन जस्टिसेबल. तो लिमिटेशन थोड़ी लगाया किसी पर. यस प्रियांशी, शौर्य सिंह, वेरी गुड. हाँ, DPSPs आर गाइडलाइंस टू लिमिटेशन. फंडामेंटल राइट्स के केस में आप बोल सकते हो कि इट कैन पुट लिमिटेशन ऑन स्टेट, है ना. सो लिमिटेशन, यस, दिस वाज अ क्वेश्चन इन वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम, और लोग एकदम कंफ्यूज कर रहे थे एग्जाम में, ये क्या गया, बिकॉज आदमी ये ठीक से नहीं पढ़ा था. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज if any question is asked in a prominent government exam, so they are copied to AILET, CLAT, ये सब होता है कई बार. ठीक है, तो conceptual clarity is very important. इसीलिए मैं इस क्लास में संडे को 8 PM पे ये सब डिस्कस कराता हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे. ठीक है, so you should be knowing about it. Okay, let's move on to the next one. हाँ, अब हम लोग जानते हैं चेयरमैन. So who is the chairman of नीति आयोग? So the prime minister. And who is the vice chairman? So Mr. Suman Berry. And CEO, that is Chief Executive Officer, is Mr. BVR Subramaniam. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. It comes under Ministry of Planning, which is directly under Prime Minister. ठीक है, yes. So ये पता होना चाहिए. आप देख सकते हो, preceding commission was Planning Commission, और नीति आयोग was established on 1st January 2015. Yes, let's move on to the next one. The next question is question number 5, which says, which of the following is the main concept behind involving DPSP in the Constitution? Yes. So पहली बात, एक गाइडलाइंस है, तो लग ही रहा है फर्स्ट वाला सही हो गया. दीज आर गाइडलाइंस, मतलब ये एक तरह के एडवाइसेस है. स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, वही आइडिया, ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है डीपीएसपी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर. ठीक है, अच्छा एक सवाल और पूछते हैं. सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग. सो फंडामेंटल for the governance of the country. This line is mentioned in the Constitution for what? Fundamental right, fundamental duty, directive principle of state policy, या preamble. ये लाइन किसके लिए मेंशन है? चलो मैं वो आर्टिकल भी चिपका देता हूं, ताकि आप बोलोगे कि आप पहले आंसर बताओ. People are saying yes. हाँ ठीक है, एक्चुअली इसी की बात हो रही थी, इसलिए आप लोग समझ गए होगे. तो क्या एक्चुअली क्या है, आर्टिकल 37 है ना.
सो डीपीएसपी जो है मेंशन कहां से कहां तक है? डीपीएसपी इज मेंशन फ्रॉम 36 से 51, 36 to 51 है ना? विच पार्ट डीपीएसपी, प्लीज टेल मी। तो 37 पढ़ोगे तो क्या लिखा गया? द प्रोविजन कंटेन इन दिस पार्ट इज नॉट एनफोर्सेबल, यहीं से लिखा हुआ है बाय एनी कोर्ट, ठीक है ना? डीपीएसपी इज 36 to 51 पार्ट 4, राइट? हाँ, पार्ट 4 इट इज रिटन लाइक दिस, ठीक है, ओके। क्या लिखा है? द प्रोविजन मेंशन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट, बट द प्रिंसिपल देयरइन लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, लिखा है, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। बट तुम लेकिन ड्यूटी बाइंडिंग ड्यूटी नहीं है। अब बोलो सर यहाँ पे शैल लिखा है, ग्रामर है, शैल का मतलब होता है मोर प्रेशर, है ना? और यू कैन से कि शैल का मतलब बाइंडिंग है, बट प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, ठीक है? मतलब द आइडिया इज दैट दे शुड डू इट, इट्स वेरी गुड दैट इफ डीपीएसपी इज इंप्लीमेंटेड, बट स्टिल इट इज नॉट बाइंडिंग, ठीक है? तो ये मैंने देखा था एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ये फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इज यहां से उठाया था, तो लोग समझ में नहीं आया कि फंडामेंटल तो फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी होगा, बट द आंसर वाज डीपीएसपी, ठीक है? तो अभी आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज़ आई वाज टॉकिंग अबाउट डीपीएसपी, दैट्स व्हाई यू आंसर्ड इट। लेकिन एग्जाम हॉल में आप ऐसे सोचोगे यहाँ पे फंडामेंटल लिखा है, यहाँ फंडामेंटल राइट होता है, यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी हो, इसी में कोई एक होगा, ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, द आंसर इज ऑप्शन सी। जनरली कीवर्ड मैचिंग वर्क करता है एग्जाम में, बट नॉट ऑलवेज। In 20% case or 30% case, the keyword matching does not work also. ठीक है? So you have to be very careful. Okay, let's move on further. Now this is very interesting और अब बहुत important हो गया ये, because recently we have seen resignation of vice president and we will soon very soon see the election of the vice president of India. So who among the following cannot vote in the election of vice president? Question गौर से पढ़िएगा, cannot लिखा है, can नहीं लिखा है. And this topic is very important for this year exam for CLAT, because vice president resignation, electoral college, who will be the vice presidential candidate, and especially the one who loses the election, because the winner everyone knows and the question maker in the exam ask about the one who lost the election. ये opposition candidate कौन था वो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है? तो वही पूछेंगे वो एग्जाम में। So the right answer is cannot vote is elected members of state legislative assembly. They vote for president election. ठीक है? सो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कौन कौन लोग वोट करते हैं? ये ए, बी और सी जो है ना, देखो मैं बताता हूं, ये तीनों जो इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएस, दीज आर फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है? और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन करते हैं? ऑल एमपीज। तो ए, बी एंड डी ये है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, electoral college, of course we are talking about electoral college of president and vice president. So इनके लिए क्या होता है? elected MPs and elected MLAs, elected MPs and elected MLAs, इनके लिए क्या होता है? all MPs, both elected, nominated, both for है ना, that's what you should, ठीक है? All members of Lok Sabha and Rajya Sabha. So the right answer is C. अच्छा, एक चीज और, हाँ, recently vice president has resigned. So the vice president resigned to whom, addressing to whom, and which article he invoked while resigning? ये न्यूज में था and we had discussed a separate class for that. So the vice president gave the resignation letter to which person, to which constitutional post holder, and under which article? हाँ, so of course he gave the resignation letter to President of India under not 61. 61 is for impeachment. Impeachment of president is impeached under is article 61. I am asking vice president resigned to President of India under which article? Not 66. No. I have made a separate class on YouTube. Not 66. No. Article 67 clause A. Yes, Priyanshi. No, you're right. ठीक है? That is what you should be knowing. तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अभी तो न्यूज में था, प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, दिस यू शुड नो, ठीक है? यस, वानिशा मंत्री, गुड, हाँ, 67 कैपिटल, ठीक है? और अगर हम ये पूछे कि इफ यू वांट टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज, देन व्हाट शुड बी द आंसर? अगर आप चाहते हो वाइस प्रेसिडेंट बनना तो मिनिमम एज कितना होनी चाहिए?
Yes, Ishita, aspirant all-rounder Aditya, you are right. 35 years. ठीक है. Now, the next one is the articles related to official language are mentioned under which part of the Constitution? Yes, part 70. C is the right answer. And Article 343 deals with this. So basically, official language is being talked about as Hindi. Plus, now even English has been also made by the help of Official Language Act, etc. So now both Hindi and English are. Constitution talks about Hindi, and it provided for 15 years for English also. But now Official Languages Act have extended it. So now we are having both Hindi and English as official language. Okay. Now the next is what is the time period for first elected Lok Sabha? देखो इससे related question आया था. I will tell you. पहले आप इसका आंसर बताओ तो फिर मैं बताऊंगा. Yes, the right answer is 1952-57. Actually हुआ क्या मैं आपको एक दो चीज बताता हूँ. देखो से the election Lok Sabha general election started happening somewhere around November December में शुरू हो गया था, but it ended in February 1952. So according to NCERT book, it is considered as 1952 elections. अब इसमें क्या आपको समझना है? 1952 में क्या क्या हुआ? फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, फर्स्ट राज्यसभा इलेक्शन, फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन. इसमें से क्लैट 2023 में क्या पूछा था? दिस वन. विच ईयर? ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? Are you able to remember? So I hope, है ना. So 52 to 57 चला. ठीक है. But the election हुआ था अक्टूबर से फरवरी 1952, but most of the portion actually happened in 1952. So that's why it is called as 1952 elections. And Jawaharlal Nehru was elected as the leader of the house. So C is the right answer. उससे पहले भी थे, but वो interim government थी 1946 वाली, वही चल रही थी. So because why? Because of course 1947 independence happened and it was not possible कि next day election हो जाए, of course. So that's why we were running the previous interim government. The next one is which types of minorities are recognized in Article 30? ये अगर आप if you state for JAM या AMU इस समय generally पूछते हैं, but of course other places also you can, this question can be asked. ये पूछना, ये आर्टिकल ही पूछ लेते हैं, ये मिटा देते, बोलेंगे the term minorities are mentioned in which article of the Indian Constitution. So Article 30 talks about it. Yes, aspirant all-rounder Atrija Priyanshi, all right. The right answer is option D, both religious as well as linguistic. So अगर आप Article 30 पढ़ोगे, it says all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish an administered education institution of their choice. अच्छा, एक चीज और पूछना है. This linguistic or religious minority, should I calculate it at national level or at state level? कौन सा लेवल पे कैलकुलेट होता है, को बता सकता है? And you have to give the reason क्यों, कहां से आया. हाँ, ये कैलकुलेट एक्चुअली स्टेट लेवल पे ही किया जाता है बेसिकली. एंड देयर आर लॉट ऑफ जजमेंट्स रिगार्डिंग इट. एक बहुत फेमस है टीएमए पाई फाउंडेशन केस. दो तीन बहुत फेमस जजमेंट है सबसे रिलेटेड, है ना. एक है टीएमए पाई फाउंडेशन केस. Another very famous one is PA इनामदार केस. ठीक है, so ये सबसे रिलेटेड है, so please remember it, है ना. So the idea is it should be calculated at the state level,
the minorities with respect to religious and linguistic. Okay. Now, please read it and answer me. Do not be in a hurry. Read the question and answer me. जल्दी नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, but don't jump to the conclusion very fast without thinking again and again. अच्छा, पहले तो आप क्वेश्चन में किन लोगों ने नॉट पढ़ा कि नहीं, पहले ये देखना, because sometimes people do not read not. फिर सब आंसर कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, because I'm sure you must have read not. If not, then please read it again and then answer me. कुछ लोग बता रहे हैं डी होगा 35 years and above. चलो ठीक है, मान लो कि हम बोलते हैं कि गलत है, तो बता दो एज कितना है. If this is a wrong statement, then please tell me what is the minimum age. If this is wrong according to you, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि डी वाला आंसर होगा, तो आप ये तो बता दो कि करेक्ट आंसर इसका है क्या, करेक्ट एज क्या है मिनिमम. प्लीज टेल मी दैट आल्सो. Yes, Priyanshi, go ahead. Very good. Okay, so I have got the answer. The right answer is option D. It's nowhere mentioned. Minimum age is not mentioned. Yes, Aditya, very good. Upper age is 65, but there is no minimum age. Must be above 35. और 35 से प्लस होना चाहिए, ऐसा कोई मेंशन नहीं है. There is no minimum age mentioned. इसका है ना. Acted as High Court judge for 5 years. So read article. Which article should I talk about? 124. Talks about eligibility, appointment, removal of judges of Supreme Court. Acted as a High Court judge for minimum 5 years. 5 साल कम से कम हाई कोर्ट के जज रहना चाहिए उनको. He should be a distinguished jurist. ये भी मेंशन, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एलिजिबिलिटी मेंशन है, हाई कोर्ट के जजेस के एलिजिबिलिटी में ये टर्म नहीं मेंशन है. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है. सिटीजन ऑफ इंडिया या लॉयर फॉर 10 years अगर अभी होता है, वो भी एक और कंडीशन. खैर, सो डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट आज तक इसको यूज नहीं किया गया है एज फार एज आई रिमेंबर. ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, ऑफ कोर्स नॉन सिटीजन थोड़ी बन जाएंगे जज. सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इट शुड बी अ सिटीजन, should have been a high court judge for 5 years or in succession and lawyer advocate for 10 years और distinguished jurist word is mentioned. और ये सारा 124 में पढ़ोगे mentioned है, article 124. प्लस एक चीज और ध्यान रखना है, the constitution has not prescribed any minimum age. ठीक है, बट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप देखोगे, प्रैक्टिकली 35 से कम का कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकता. आप खुद सोचो ना, यू हैव टू बी अ लॉयर फॉर 10 years और आप हाई कोर्ट जज फॉर 5 years. तो आपको लगता है कोई 35 साल से कम में बनेगा? सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हार्डली यू विल फाइंड एनी पर्सन लेस देन 55 बिकमिंग अ सुप्रीम कोर्ट जज. मतलब ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट द मिनिमम एज, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आई थिंक hardly we have seen any person becoming a Supreme Court judge who is less than 55. ठीक है, तो of course वो लास्ट में 5-6 साल 7 साल 8 साल के लिए बनते हैं. So that is the idea behind this. Okay, some people became only for 2 or 3 years only. ऐसा भी होता है कुछ केस में. खैर, now let's move on to the next one. The Supreme Court decides the dispute between center and state, between 2 or more states. This power comes under what? और पहले कोई कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या लिखा है. ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या मतलब हुआ, अपेलेट जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, क्रिमिनल जुरिसडिक्शन, इसका मतलब ही पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बस रट लिया और चले गए. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर इसका कोई आर्टिकल बता देगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो. ओरिजिनल मतलब क्या हुआ ओरिजिनल का, एंड विच आर्टिकल आई एम टॉकिंग अबाउट. यस इशिता, प्रियंशी, अदीजा, यू ऑल राइट. बताओ उसका मतलब क्या हुआ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. देखिए बाकी सब मतलब क्या ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, क्या मतलब हुआ. यस दिविज राइट. एंड व्हिच आर्टिकल इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. फर्स्ट 131. यस प्रियंशी, इशिता, नॉट 32, 131. हाँ, 32 में भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है, बट यहां पर जो है ना 131 वाली बात होगी. ठीक है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब डायरेक्टली इट विल गो, द मैटर विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, है ना. ओरिजिनली एकदम किसी और से अपील होकर के, अपेलेट में तो अपील में आ रहा है,
comes as an appeal. Advisory वही 143 है ना, और ये criminal jurisdiction हो गया. तो original मतलब हुआ. So always remember the dispute between a central government versus any state government cannot be heard by the High Court. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट्स से कुछ इशू है, जैसे केरला, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज सम इश्यूज विद सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट ऑफ केरला. लेट्स से देयर इज अ डिस्प्यूट. दिस कैन नॉट बी हर्ड बाय केरला हाई कोर्ट. ऐसा नहीं हो सकता. इट विल ओनली बी हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, इस होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ओरिजिनली एकदम सुप्रीम कोर्ट के पास ही होगा डायरेक्टली, है ना. हाँ, एक्सक्लूसिव पावर ही कैसे बनी. हाँ, सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस. सिमिलरली जैसे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कुछ अगर धांधली हो, है ना, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट regarding the election of vice president or president, only the supreme court will hear, no high courts can hear, है ना. और भी होता है, ठीक है. So even article 32 वाला writs को भी मान लेते हैं original jurisdiction, because directly you can go to the supreme court. However, under 226 also people can go to the high courts for writs and etc, but generally उसको भी original उसी में ले लेते हैं, है ना. Advisory jurisdiction वही 143 ये न्यूज में काफी, I am sure you must be aware. Okay, that is what you should know. ठीक है. Now here is the next question. इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है. The ideals of life, liberty, fraternity, equality. Liberty, fraternity, equality contained in the preamble are borrowed from which constitution? बहुत famous revolution, the French Revolution. I am sure you must have heard about French Revolution. सुना? French Revolution. What was the date when French Revolution happened? I think 2 years back, PM Modi was invited as a chief guest. 14th July 1789. French Revolution. Storming of Bastille Fort. 14th July is called as Bastille Day. So every year 14th July is celebrated as Bastille Day by French government. And I think 2 years back, PM Modi was invited to Bastille Day celebration. Okay, so D is the right answer to this question. Okay, yes, Rudra, Priyanshi, Aditya, you are the right. हाँ, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये है लिबर्टी, ये फ्रैटर्निटी, ये इक्वालिटी. फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैटर्निटी? फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड के सेंस में, है ना, भाईचारगी. यस, इशिता, परीक्षा, यू आर राइट. हाँ, गुड. चलो एक होमवर्क दे रहे हैं, एंड प्लीज आफ्टर द क्लास इज ओवर राइट इट इन द लाइव चैट. यू विल बी प्रोवाइडेड अ रिकॉर्डेड वीडियो, सो राइट इन द रिकॉर्डेड वीडियो. क्या लिखना है? क्वेश्चन है कि जस्टिस, दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री, व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन. After the class is over, you will be provided a recorded video and answer it there. Okay, so this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.